नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर.के. सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका इस्तेमाल ENT यानी ईयर नोज थ्रोट सर्जरीज में। पहले सेगमेंट में हम AI को समझेंगे और दूसरे, तीसरे और चौथे सेगमेंट में हम AI एप्लीकेशंस इन ईयर सर्जरीज, नोज सर्जरीज और थ्रोट सर्जरीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और AI को समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जो कंप्यूटर को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसमें एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जिससे कंप्यूटर डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझ सके। ENT सर्जरीज में AI का इस्तेमाल करने से पहले हम AI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। AI एक मुख्य शाखा है। उसकी जो मुख्य शाखा है वो है मशीन लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर अपने आप से सीखता है डेटा एनालिसिस के थ्रू। इसके अलावा डीप लर्निंग एक एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। AI का इस्तेमाल ENT सर्जरीज में मल्टीपल एरियाज में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में AI का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स को पेशेंट की कंडीशन और उनके अच्छे एनालिसिस करने में काफी हेल्प मिलता है। इससे ट्रीटमेंट प्लान को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और सर्जरी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। AI के थ्रू इमेजिंग टेक्निक्स जैसे MRI और CT स्कैन से लिया गया डेटा को एनालाइज करके डॉक्टर को और भी डिटेल्ड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। यह उन्हें सर्जिकल प्लानिंग में हेल्प करता है और सर्जरी के दौरान प्रिसिशन को इंप्रूव करता है। ओवरऑल AI ENT सर्जरी में एक गेम चेंजर हो सकता है, जिससे ट्रीटमेंट और सर्जरीज को मोर एफिशिएंट और मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इससे पेशेंट को भी बेटर आउटकम मिल सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी काफी कम हो सकता है। अब हम चलते हैं सेगमेंट नंबर 2 की तरफ, यानी कि AI एप्लीकेशंस इन ईयर सर्जरी। ENT surgeons often face challenges during ear surgery due to complex anatomy and delicate structures involved in the ear. However, AI has emerged as a valuable tool to enhance various aspects of ear surgeries. The various aspects are: number 1 is diagnostic assistance. AI algorithms can analyze imaging scans such as CT scans and MRI images to detect abnormalities or anomalies in the ear structure. This helps in accurate diagnosis and planning of the surgical procedures. Number 2 is surgical planning. By analyzing a large database of ear surgeries and outcomes, AI can assist surgeon in developing personalized surgical plan based on the patient's specific anatomy and condition. This leads to optimized surgical approaches and better outcome for the patient. Number 3 is robot-assisted surgery. AI-powered robotic systems can aid surgeons during ear surgeries by providing precision and stability. These robots can perform tasks with high accuracy, reducing the risk of errors and improving surgical outcomes. Number 4 is real-time feedback. AI can improve real-time feedback to surgeons during the ear surgeries by analyzing intraoperative data such as tissue characteristics, blood flow, and nerve activity. This feedback helps the surgeon make informed decision and adjustment during procedure, leading to safer surgeries. Number 5 is post-operative monitoring. After surgeries, AI can analyze patient data to monitor recovery progress and detect any complication early on. This allows for timely intervention and management, ensuring a better post-operative care of the patient. Now, in the segment number 3, we will discuss AI applications in nose surgeries. Nose surgeries, also known as rhinoplasty or nasal surgeries, can benefit significantly from the integration of artificial intelligence. Here's how AI can be applied in various aspects of nose surgery. Number 1 is the image analysis. AI algorithms can analyze high-resolution image scans such as CT scans and MRI images of the nasal cavity and to identify the structural abnormalities, tumors or pathologies. This assists surgeon in pre-operative planning and decision making.
Number 2 is virtual simulations. AI-powered software allows surgeons to create virtual simulations of planned surgical procedures. This enables them to visualize the expected outcome and make adjustment before performing the actual surgeries, leading to more precise and tailored interventions. Number 3 is predictive modeling. By analyzing patient data and historical surgical outcomes, AI can develop predictive models to forecast the likelihood of success of a potential complication for specific nasal surgery. Surgeon can use the information to personalize the treatment plans and manage patient expectations. Number 4 is surgical navigation. During the actual surgery, AI-powered navigation systems can provide real-time guidance to the surgeon, enhancing accuracy and reducing the risk of errors. These systems can track surgical instrument, anatomical landmarks, ensuring optimal placement and alignment during the procedure. Number 5 is recovery monitoring. AI algorithms can monitor the post-op recovery by analyzing patient data such as vital signs, pain level, medication adherence. This enables early detection of complications or deviations from the expected recovery trajectory, allowing for a timely interventions and improve patient's outcome. Now, lastly, in segment 4, we will delve into the AI applications in throat surgeries. Throat surgeries, also known as laryngoscopic procedures, involve complex structures and delicate tissue. The integration of artificial intelligence in these surgeries offer several benefits and advancements. The basic benefits and advancement are: number 1, the diagnostic assistance. AI algorithms can analyze imaging scans such as CT scans and endoscopic images to identify abnormalities in throat, including tumor, lesions, and surgical defects. Number 2 is voice analysis. AI technology can analyze voice patterns and voice characteristics to assist in diagnosis and treatment of voice disorder. By evaluating parameters such as pitch, resonance, vocal quality, AI systems can provide valuable insights for voice therapy and surgical intervention. Number 3 is surgical planning. AI-based software can assist surgeon in developing personalized surgical plans based on patient's specific character and anatomical conditions. By analyzing a vast database of previous sleep surgeries and outcomes, AI can recommend optimal surgical approaches and techniques. Number 4 is intraoperative guidance. AI-powered navigation system provide real-time guidance to the surgeon during throat surgeries, ensuring precision and accuracy. These systems can track surgical instruments, monitor tissue characteristics, and identify critical anatomical structure, minimizing the risk of complications and improving surgical outcomes. Number 5 is rehabilitation monitoring. After the throat surgeries, AI algorithms can monitor the patient recovery and rehabilitation progress by analyzing the patterns, swelling functions, and other relevant parameters. This enables early detection of post-operative complication and facilitates timely intervention and rehabilitation strategies. Overall, AI has the potential to revolutionize ear, nose, and throat surgeries by enhancing diagnostic accuracy, improving surgical precision, and optimizing post-operative care. तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे AI ENT सर्जरी में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे कानों, नाक और गले के इलाज में एक नया दौर ला सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे आप कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि AI का ENT सर्जरी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। Until next time we meet, stay healthy and stay happy. Thank you.